Assalamu alaikum. This is Dr. Ruhi here from ZAARA Herbal Multispeciality Clinic. Again, I am here with a new topic called cirrhosis of liver, called the damaged liver, otherwise called as the damage of liver. So we'll come to know in this video what is cirrhosis of liver, why it happened, and what are the complications, what are the causes, what are the signs and symptoms when a patient is suffering with a cirrhosis of liver. As you all of know, liver is the vital organ of the body. It is playing the major role in the body. It is performing the important functions of the body, like filtration of blood, secretion of bile. First of all, mechanism of the body, mechanism of the food what we are having daily, going to convert and change into the blood and supplies to all the organs of the body. So these are the major functions of the liver. Along with that, it's going to excrete all the toxins from your body. These are the normal functions of the liver. With the healthy liver, if a patient is healthy, the normal functions will happen with the liver. So what will happen in the cirrhosis of liver? The actual texture going to lose itself. It's become hard and hard. The nodules and the cells and tissues will become shrink. It's going to squeeze itself, and the scar formation over the cells and tissues will happen in the cirrhosis of liver. Might be you heard that a patient is suffering with the cirrhosis of liver. So there is a connection with the alcohol abuse. When a patient is alcoholic, definitely the chances to get a cirrhosis of liver. It means he is going to suffer with the damage of the liver or cirrhosis of liver with a weak liver. But sometimes it's not necessary. When the patient does not use any alcohol, it can happen. Why? The reason is the causes are, फर्स्ट इज़ अल्कोहलिक लिवर, यानी अल्कोहल जब लेते हैं तो उस टाइम पे सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ फैटी लीवर. अगर आपका लीवर फैटी है, इफ़ योर लिवर इज़ फैटी, इफ़ योर लिवर इज़ वीक, इफ़ इट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, सो एट दैट टाइम इट कैन लीड टू अ सिरोसिस ऑफ liver after a very long time. And the third one are the important thing are the infections, viral infections, bacterial infections. As you all of know, hepatitis A, B, C. These are the important causes of the cirrhosis of liver. We are dealing 70 to 80% cases of alcoholic abuse and with hepatitis A, B, C. Along with that, sometimes, especially non-alcoholic cirrhosis of liver can happen to obese women's fatty liver. The reason is fatty liver. So at that time you come to know you're suffering with a fatty liver, you're suffering with a weak mechanism of the liver. Your liver functions are very much weak. How you come to know about that your liver is weak? Your daily, you can absorb, you can notice in the daily routine, you can notice that whatever you are consuming, what the food you are having daily, it's not going to digest properly. All the time you will feel a hyperacidity or the gastric changes in the mucosa, bloating, tight abdomen, and with a constipation, and you does not have a proper appetite. So you can come to a conclusion that your liver is not going to produce correct functions daily. So what will happen in cirrhosis of liver? These are the sign and symptoms. यानी पेशेंट को भूख बराबर नहीं लगेगी एंड खाना हजम नहीं हो पाएगा उसको डकारें आती रहेगी, या वो इरखान से गुजरेगा, उसको इरखान होगा. जब when you come to know that you are suffering with a cirrhosis liver, what are the managements, how you have to manage when a patient come to you that might be he or she is suffering with the cirrhosis of liver? What are the managements you have to select? What will be the management in Unani concept? As you all of know, there is no permanent solution in allopathic medicine. I proudly say right now, all the gastroenterologists, whether they are belong to national or international institutes, might be they have taken the degrees from USA or London or abroad, they are going to prescribe a Unani product called Jigreen. It's a Hamdard product, as you all of know. They are going to prescribe Jigreen. Why? They blame Unani is not working. Unani does not have any stamina in that. They are not going to cure properly. It only damages you. They used to wash the brain of the people. So
why you are selecting a Unani drug? If Unani does not have any potential to cure any disease, why you are selecting our drug? Why you are selecting our combination? Why you are selecting the Unani product on your tables? I have seen in many corporate hospitals, and the doctors are from national and international level, they are prescribing Unani drug called Jigreen in the cases liver damage, in the cases cirrhosis of liver, in the cases of fatty liver, in the cases where they are not going to manage liver complications, they are prescribing easily, they are prescribing Jigreen, because Unani has the potential to cure, alhamdulillah, top to bottom, but slowly the results will progressively will come, the results. So alhamdulillah, I proudly say the Unani has the potential to cure every disease with a good efforts. We have to take with a good efforts. So what will be the management when a patient come to you? How you manage to a patient when a patient come with a cirrhosis of liver? आपको क्या करना चाहिए cirrhosis of liver का patient तब आपके? First of all, you have to check the grade 1, grade 2, grade 3, कौन सी grade में, along with a might be he or she suffering with the complications or not. You have to done the proper diagnosis. What will be the diagnosis? You have to do USG ultrasonography with a endoscopy. Endoscopy इसलिए कराएंगे कि esophageal varices. What are the esophageal varices क्या है? It's a major complication in cirrhosis of liver. It can happen, it can occur due to the pressure which is creating by the liver. यानी जो हलक से जो पाइप होता है, कॉमन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, ईसोफेगस जो होता है, जो खाने का जो ट्यूब आप कहेंगे, उसमें छोटे छोटे वायरसेस यानी छोटे छोटे वेन्स बल्ज हो जाती है, एक प्रेशर क्रिएट करती है, एंड पोर्टल हाइपरटेंशन होता है. व्हाट इज़ पोर्टल हाइपरटेंशन? यानी लीवर से जो छोटे छोटे एक ट्यूब लाइक जो होता है उस यानी पोर्टल हाइपरटेंशन माने उसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसका डायमीटर बढ़ जाता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है, उसमें ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है. तो एट दैट टाइम इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन. द पेशेंट कैन ब्लीड एनी टाइम, इट कैन रप्चर एनी टाइम. लीवर में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाने की वजह से वो दूसरे ऑर्गन्स पर, दूसरे वेन्स पर, दूसरे कैपिलरीज पर प्रेशर क्रिएट करता है, यानी बराबर ऑटो सर्कुलेशन नहीं होता है वहाँ पर. एट दैट टाइम द प्रेशर गोइंग टू हैपन द ईसोफेजियल वायरसेस इन द एब्डोमेन, एंड जब आपके पेट पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एट दैट टाइम द पेशेंट गोइंग टू सफ़र विद द असाइटिस, द फ्लूइड इन द एब्डोमेन, माइल्ड, grade 1, grade 2, grade 3, and with the complete body edema, the muscular atrophy, weight loss, with a प्रोटीन लॉस, उनका प्रोटीन लॉस होते रहता है बॉडी में से, एंड इट कैन लीड टू अ किडनी फंक्शन में भी, इट कैन इंटरप्ट द किडनी फंक्शन. सो दीज आर द मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द cirrhosis of liver. Now how do you cover with the complications? How do you manage in Unani when a patient come to you? First of all, diet restriction is very much important in our concept. Diet restriction के साथ आप चलेंगे. The selection of food is very much important. The doctor should know what the patient has to eat, or what the patient would select the foods, what type of foods they have to select, because we are dealing with a pure Unani, so you have to take care of the diet and restricted diets. Then you have to select the diet with a good management of the cirrhosis of liver. What are the management of cirrhosis of liver? You have to use the hepatoprotective drugs, you have to use the anti-inflammatory drugs, you have to use the free bowel movements, like the medicine which is going to work the lower tract of the body, and along with that you have to create a good function in the liver. So we have a lot of herbs, we have a lot of combinations in Unani that is going to cure the liver, because Allah has given अल्लाह ने एक ऐसे मिराकुलस चीज़ रखी है लीवर में कि वो अपने आप को खुद रिपेयर कर सकता है. इट कैन रीजनरेट इटसेल्फ, इट कैन रिपेयर इटसेल्फ. अल्लाह हैज़ गिवन अ सुपर पावर इन द लिवर. लिवर इज़ द one and only organ in the body that can repair itself, that can regenerate itself, even though it's damaging. अगर किसी बंदे का आपने हाफ लिवर निकाल दिया है तब भी वो रीजनरेट हो सकता है, तब भी वो रिपेयर हो सकता है. So it's a request to all the patients who are suffering with the liver disorders that take care of your diet with a good positive mind. Select your good diet with 6 to 7 meals in a day, because your liver is very much weak. So you have to take care. You should not take a bunch of food at that time. Divide into a small portions. Take 6 times a day.
and always keep in a mind that you should not suffer with the constipation. if यानी अगर लीवर सिरोसिस में constipation हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, ना ही उनको लूज मोशन होना चाहिए, ना ही constipation होना। अगर उनके मोशन डार्क कलर के आ रहे हैं, इट लुक लाइक दैट अ ब्लड इज़ कमिंग, इट ये बहुत ही डेंजरस साइन है। अगर उनके ब्लड में कोई अगर उनके मोशन में कोई ब्लड नज़र आया या उनके वॉमिटिंग के ज़रिए कुछ उनको ब्लड नज़र आए, एट दैट टाइम यू हैव टू कंसल्ट योर नियरेस्ट डॉक्टर। आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से पहले यानी आप उनसे कंसल्ट करेंगे। एट दैट टाइम वी रिक्वायर उसको आप इसोफेजियल जो ब्लीड होता है उसको वायरसेस को बैंड डालते हैं वो लोग, कंस्ट्रिक्ट करते हैं उसको वो लोग। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट द यूनानी मेडिसिन इफ़ द पेशेंट इज़ ब्लीडिंग लाइक दैट। Then we have a lot of combination, we have a very good combination which is going to work 110% on the liver. So फिर उसका हम डायग्नोसिस करा के SGOT SGPTs देखेंगे, अल्कलाइन फॉस्फेट देखेंगे, सेरम इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे। उसी के साथ पेशेंट को अच्छी तरीक़े से आप एक कॉन्फिडेंस में लेंगे, एक अच्छी गुफ्तगू करेंगे, उसको अच्छी तरीक़े से पॉजिटिव वे में लेके आप अच्छी गुफ्तगू करके आप अपने कॉन्फिडेंस में लेके पेशेंट को बहुत ही अच्छे अंदाज में यानी उनको एक नरमी के साथ आप समझाएंगे कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि आपके समझाने से बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क हो सकता है। उनका माइंड चेंज हो सकता है, उनका सोचने का अंदाज़ बदलता है। दे विल थिंक पॉजिटिव अबाउट देम सेल्फ, बिकॉज ऐसे बंदे बहुत ही यानी एक डिस्टर्बेंस से गुज़रते हैं जब ऐसी बीमारी लाहक होती है। तो यूनानी में बहुत ही इसका कामयाब इलाज है। जो लोग कहते हैं कि यूनानी में कामयाब इलाज नहीं है, मैं उनसे सवाल करूँगी कि क्यों गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जिग्रीन को prescribe करते हैं, why they are prescribing jigreen, and might be you heard that in the cases of renal calculi या cystone लिखा जाता है, बजूरी लिखा जाता है। क्यों? ये भी तो यूनानी ड्रग ही है, ये भी तो यूनानी ड्रग है। आपने जहाँ सेलेक्ट कर लिया वहाँ यूनानी अच्छा हो गया, आपने जहाँ छोड़ दिया वहाँ यूनानी ख़राब हो गया, ऐसा नहीं है। यूनानी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू क्योर टॉप टू बॉटम, but it require a good efforts, good knowledge with a good subject you have to select. So आप यूनानी के ज़रिए से एक मुकम्मल तरीक़े का कामयाब आप इलाज कराइए। इसमें इसका कामयाब इलाज है। आप यानी लीवर का एक अच्छी तरीक़े से ख़याल रखिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी में, और इसको टाइम लगने के लिए बहुत सारा वक्त लगता है, ख़राब होने के लिए बहुत सारा वक्त लगता है। तो आप उस ख़राबी का इंतज़ार ना करें, आप टाइम पे अपने मील्स लें, आप फैटी फूड्स को अवॉइड करें, यू सेलेक्ट अ गुड ऑयल, यानी टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, एक्सरसाइजेस करिए। इसी के साथ यूनानी में तकरीबन तमाम चीज़ों का कामयाबी से हम इलाज कर रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।